वालिदैन से गुजारिश है कि स्कूल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके एंड में आ जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. It's science class of grade 6. The topic which we are going to discuss today is solubility in water. Students, we are learning the properties of material. So in the last lecture, we have discussed about the states. Today, we are going to discuss about the solubility in water. What is solubility? So students, the property of a material due to which it dissolves in a liquid. What is solubility? The property of a material due to which it dissolves in a liquid. मतलब मटीरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दैट मटीरियल डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? मटीरियल की वो प्रॉपर्टी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं जिसकी वजह से वो मटीरियल लिक्विड में डिजॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक 2 glasses, each half filled with water. In one, you'll add 1 tablespoon of sand, and in the other, you will add 1 tablespoon of salt. Stir them well. What will you observe, students? You will observe that the sand particles will be visible in the first glass, but in the second glass, you will see that the salt will disappear. What we have learned from this example, that is, the salt is soluble in water, whereas sand is insoluble in water. Let's learn about some related terms with this topic. The liquid which dissolves the substance is called a solvent. Means that जो लिक्विड डिज़ोल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। और जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है उस लिक्विड के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। अगर हम वाटर की एग्जाम्पल को देखते हैं तो इन दैट केस वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। Let's learn about the solution. What is a solution? A solution is a mixture of solute and solvent. You can see in the picture that it is a mixture of what? Solute and solvent. It means water and salt. Clear? Beta, water is known as universal solvent. It is a property of the water. Okay, because why it is called as universal solvent? Because water can dissolve a large number of substances. That is why it is called as universal solvent. Okay, it means कि बहुत सारे substances को अपने अंदर dissolve कर लेता है। You can take your example बेटा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर मौजूद है, उसकी वजह से क्या होता है? क्यों इतना सारा पानी मौजूद है? बिकॉज हमारी बॉडी में जाने वाले हर सब्सटेंस को जो है वाटर क्या कर सकता है? अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। दैट इज़ वाई इन लार्ज अमाउंट द वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। देयर आर 2 types of liquids, miscible liquids and immiscible liquids. Students, miscible liquids are those liquids which mix with each other, right? जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और जो वाटर के साथ मिक्स हो जाए उसको हम क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल, हम शैम्पू और लेमन जूस की अगर बात करें तो जब भी आप शैम्पू को वाटर में मिक्स करेंगे
या फिर अगर आप लेमन जूस को वाटर में मिक्स करेंगे सो वो आराम से मिक्स हो जाएगा. ओके. Immiscible liquids, students, are those liquids that do not mix with each other. So they are called as immiscible liquids. For example, kerosene and oil. अगर आप ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे या केरोसिन को मिक्स करेंगे तो वो पानी में मिक्स नहीं होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ग्लास लें और उसके अंदर वाटर के ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ऐड करें. यू विल सी दैट ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा. ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको वाटर ग्लास की सरफेस पर नज़र आएंगे. सो ऑयल इज़ इमिजिबल लिक्विड. For example, students, you can take example of the gases as well. Gases like carbon dioxide and oxygen are soluble in water. For example, अगर आप aquatic animals की बात करें, फिश रेस्पायर कैसे करती है? वाटर में. इट मीन्स वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व्ड है. दैट इज़ वाई फिश एंड प्लांट्स कैन रेस्पायर इन वाटर. ओके. बट सम gases are such like nitrogen and hydrogen. They are almost insoluble in water. Clear? Students, it's time to assign home task. Question number 1 is define solubility. Question number 2 is what is solvent? Question number 3 is which cases are soluble in water? Students, your home task is the most important part of this lecture. I'll be waiting for your response. Thank you so much. वालिदैन से गुजारिश है कि दिया गया होमवर्क अपनी निगरानी में करवाएं और इसका टेस्ट खुद या ट्यूटर से करवा के इसकी पिक्चर लेकर स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए ताकि टीचर बच्चे का होमवर्क चेक कर सके. व्हाट्सएप करने के लिए स्कूल व्हाट्सएप नंबर है 032431000802. अल्लाह हाफ़िज़.